Hi everyone, welcome to today's video. So on today's video, I'm going to discuss with you the recent budget. I'm going to present the entire budget in 10 simple points. There are good points, bad points. I'm going to help you understand the economics behind it. I'm not supporting the political parties. I'm not opposing them. I have nothing to do with politics. I'm just trying to teach economics and the implication of this budget on certain stocks. So कहानी शुरू करते हैं. Very simple 10 points. I will go point by point. The first point comes from Mr. Rajnath Singh, and here is the tweet that you can see. He has congratulated Mrs. Nirmala Sitharaman कि बहुत अच्छा बजट आपने प्रेजेंट करा है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बातें हैं, एवरीथिंग गुड फॉर ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट ही हैज रिटन इज दैट दिस बजट हैज इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले टू 11.1% फ्रॉम financial year 24 to 11.1 lakh crore for financial year 25. अब just to set some context, what is capital expenditure? Basically, capital expenditure is good expenditure. Basically, जो आपकी roads बनती है, infrastructure बनता है, जो आपका development होता है, that is capital expenditure. इसके अलावा आपका revenue expenditure होता है, जो salary में आपका निकल जाता है, तो वो productive नहीं होता. Capital expenditure is productive in nature. So जितना ज़्यादा आपका capital expenditure होगा, that is good for the economy. बिकॉज अच्छी रोड्स बनेंगी, अच्छे ब्रिजेस बनेंगे, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एंड आगे चल के आप ही का भला होगा. सो देयरफॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड. सो क्या ये चीज हुई है बजट में? यस, दैट इज देयर. In 2023, the total capital expenditure was 10 lakh crore. Now it has been earmarked at somewhere around 11.11 लाख करोड़. सो करीब करीब 11% के आसपास बढ़ गया है. तो यार अच्छी चीज है, राइट? नो डाउट अबाउट दैट. दिस इज अ पॉजिटिव इन द बजट. वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट. दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस बजट. सो दिस इज पॉइंट नंबर वन. नाउ इसी से रिलेटेड आता है पॉइंट नंबर टू, विच इज द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब भाई इतना पैसा खर्च करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, राइट? आपकी रोड्स बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी. सो दैट इज देयर. बट मैं आपको है ना एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ दैट व्हाई इज दिस थिंग क्रिटिकल. अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ था एंड मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो बेसिकली मैं आपको उसमें स्टोरी समझाता हूँ, सो दैट वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट दिस बजट टू वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी CAPA की, राइट? एंड इस पर, एज पर दिस रिपोर्ट, it says that nearly 700 aircrafts in India are going to be, out of 700 aircrafts in India, 200 are going to be grounded by March of 2024. So 700 aircrafts हैं, उनमें से 200 रुक जाएंगे, 200 will not function. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो टिकट प्राइस है आपके, अगर आप एयर ट्रैवल करते हो, that is going to skyrocket, right? So this is something that is imminent. It is going to happen. Now comes the most important question कि भाई साहब ऐसा हो क्यों रहा है, right? So उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी बैक स्टोरी. So the back story is that in the last 10 years, the number of air travelers have gone up by 4 to 5 times. जितने लोग ट्रैवल करते थे, 4-5x की ग्रोथ हो चुकी है. But number of airports have roughly doubled. They have not gone up by 4 or 5 times. Number of aircrafts have roughly doubled, have not gone up by 4 or 5 times. What I'm trying to tell you is that when this demand of certain thing, for example, air travel has gone up massively and उसकी supply, जो infrastructure है, वो create नहीं हुआ है उस हिसाब से, so what will happen? Prices will go up. तो ज़्यादा पैसा भरने के लिए आप तैयार हो जाओ when it comes to air travel. अब इसमें हम सरकार पे आरोप लगा देते हैं कि यार, you know what, सरकार is this, that. Yes, a part of it is there, but we also need to acknowledge the fact that a lot of infrastructure needs to get built in India. So capital expenditure लगाना and infrastructure पे focus are critical aspects that have been done in this budget, so to say, which is good. More precisely 2024 वाला जो बजट है, उसमें फोकस कहाँ पे है? तो उसमें एनर्जी, मिनरल, सीमेंट, रेलवे, फ्रेट कॉरिडोर्स, अब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा आपको ज्ञान दूंगा नहीं. 100 बातों की एक बात, राइट? और लाइक जस्ट टू समराइज वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स. See, overarching development is happening in the infrastructure space, no doubt about that. All that is good stuff. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हो रहा है. अब किस गति से होता है, टू व्हाट एक्सटेंट आर दी बेनिफिट्स पास्ड ऑन टू दी इवेंचुअल सिटीजन्स, दैट रिमेन्स टू बी सीन. जैसे अभी एक ब्रिज बना था इन मुंबई, आई थिंक, एंड उसमें दी मंथली पास दैट यू विल हैव टू बाय 12,500. यार, अब मोस्ट ऑफ द इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड दैट, सो उनके लिए तो इट्स इनएक्सेसिबल, नो, दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन. बट दिस विल गो इनटू व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आप ये सब बातें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो. येस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड as long as you get to use it at sensible prices. So this is where I will stop this point too. It's good point again, nothing wrong with that. Third is tourism sector. इसमें बहुत stress दिया गया है. मैं गोवा में रहता हूँ. I've been spending my time, most of it is in Goa for the last 2.5 years. Goa is a tourism state. This is a topic that I can speak at length about. I run my Airbnbs.
ये सारी चीजें मैं करता हूँ तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसमें. आई गेट टू सी दैट ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ गोवा's population entirely depends on tourism. This is not just the situation in Goa, this is a situation across a bunch of states in India. एंड अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन, वेरी हेल्दी साइन. यहाँ तक तो स्टोरी सबको समझ में आती है. अब इसमें मैं आपको इंसाइटफुल पॉइंट क्या बता सकता हूँ. तो चलिए पहले बजट की बात करते हैं. तो इसमें जो बोला गया है, राइट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्वीट. The success of G20 events organized across 60 cities has helped tourism, including spiritual tourism, are booming and states will be encouraged to develop tourism circuits and market them globally. ओके, बहुत सारी बातें करी गई हैं. देखो, अब समझने वाला पॉइंट जो आता है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल रियलाइज इफ यू ट्रैवल इन इंडिया एंड इफ यू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया. सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया. आई कीप ऑन ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एंड आई कीप ऑन ट्रैवलिंग विद इन इंडिया ऑल्सो. आई गेट टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. सो पहला चीज तो ये कि यार देखो, टूरिज्म under one tag we cannot tag it, because when foreign tourists come to India, it benefits India a lot more compared to a domestic tourist deciding to visit either Lakshadweep or Goa. Okay, क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो ना, अगर आपने छुट्टी बनाने जानी है, and if you are an Indian, ठीक है, 1 year you will go to Goa, another year you might go to Lakshadweep, and maybe चलो ठीक है, इस साल हवा चली हुई Lakshadweep की, so maybe you will go there this year. If you are a domestic tourist, is new money coming into India? The short answer is no. So 100 बातों की एक बात, if foreign tourists are coming to India, that is a much higher success matrix. That is the vision with which a lot of tourist destinations should be developed and need to be developed. अब उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ बहुत ही ज्यादा, राइट, इस सेंस पे. जैसे फॉर एग्जांपल इन गोवा, इफ यू गो एंड विजिट द बीचेस, द सिविक सेंस इज रियली पुअर इन अ कंट्री लाइक इंडिया. आई एम जस्ट स्टेटिंग आउट फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कि यार अब बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, दे डू सन बेदिंग, राइट, एंड दे आर वेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स. लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं, राइट. नाउ एज अ फॉरेन टूरिस्ट यू नीड टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव व्हाट मेक्स देम कंफर्टेबल. एंड ऑफेंड तो होते हैं, सामने छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, दुनिया भर की चीजें शुरू हो जाती हैं. सो स्पेशली इन लाइक नॉर्थ गोवा दिस हैपेंस क्वाइट एग्रेसिवली. लॉट ऑफ स्टेट्स, राइट, गोवा में तो फिर भी ये सब होता है, राइट. आई मीन इन द सेंस की फॉरेन टूरिस्ट आर स्टिल एट मच मोर ईज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बट अनलेस सिविक सेंस इंप्रूव्स देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन. सो वन एस्पेक्ट इज कुछ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ एजुकेशन होनी चाहिए फॉर स्टेट्स टू एक्चुअली lead to this. Certain more stringent control needs to be there. I'll give you another instance. For example, there was a tourist from Britain, and I think he or she was going on Benoli Beach, right? And then there was a dog which chased a buffalo, and buffalo went and उसने उड़ा दिया उस tourist को. So now, yeah, this type of instances, if they keep on happening, what do you think will be the situation of tourism few years from now? I see. So currently, I'm in Phuket in Thailand, and यहाँ पे I see. And Phuket is a town in a way, right? The infrastructure here is much stronger in a way, right? बड़ी roads हैं, काफी बड़ी roads हैं, smoother roads हैं, options to eat are massive, right? इस तरीके का infrastructure development needs to be there, and enough incentives need to be built कि इस तरीके की facilities provide करी जाएं. And civic sense is going to be critical from this respect. So it's very, very critical that some bit of effort is put on this. But ठीक है, right? I mean, this is like a general point. I don't think that this hits us per se, but this is very important. So two things. One is that we need to figure out marketing strategies on how to bring foreign tourists. That is critical. That is extremely important. इसके बारे में बात ही नहीं होती. Second is quality of infrastructure. Quality of infrastructure तभी आएगा when businesses actually go and start building. More businesses are built in India. So from that respect, the quality of tourism will improve, right? So this is point number 3. Point 4 on the budget was regarding deep tech across different areas. आज ही केस हुआ है कि पेटीएम जो है वो 20% से करेक्ट कर गया. Why? Because RBI came out with a mandate. जो पेटीएम्स पेमेंट बैंक है, that will be banned, so to say, from running operations. And एक ही दिन में स्टॉक 20% करेक्ट कर गया. ऐसे कुछ हुआ था. One sided rule giving on cryptos. Most of the people building crypto in India, they left, they went to Dubai, they went to Singapore, they went to Portugal. वहाँ पे अच्छा थ्राइविंग इकोसिस्टम है. अब भाई हो सकता है आपको अच्छा ना लगे क्रिप्टो, हो सकता है आपको फिनटेक अच्छे ना लगे, बट सम यूनिफॉर्मिटी नीड्स टू बी देयर. इफ सर्टन इश्यूज हैव बीन क्रिएटेड बाय पेटीएम, इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. आप कितना भी R&D बजट बना लो, इफ दैट सेंस ऑफ belonging is not there, or if that sense of safety is not there, then new money is not going to come in. VCs आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे, right? I mean, do you think फिनटेक में पैसा डालने से पहले वो 50 बार नहीं सोचेंगे? They are definitely going to think about all these things. This stuff is good, but I think more effective communication needs to be done. I'm not trying to take sides of Paytm or
RBI here. RBI must be right from its bit. But what I'm simply trying to point out is that the way that communication happened, at least वो spookiness नहीं होनी चाहिए कि यार आपने और ये सब कर दिया. तो ठीक है, R&D बजट बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन I don't think that unless you improve the VC ecosystem, create that entrepreneur in residence type of programs, create that model of mentorship, create that entire connect between universities, funding organizations वगैरह वगैरह, सिर्फ बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, राइट. एंड हर साल बढ़ता ही रहता है, राइट. उससे कुछ फर्क नहीं होके आता. आप ऐसा बता दो कि हाउ मेनी AI कंपनीज और गुड AI कंपनीज, फ्रंट एंड AI कंपनीज हैव बीन बिल्ट, हाउ मेनी टॉप टेक कंपनीज हैव बीन बिल्ट इन इंडिया. आप बोलोगे कि TCS, Infosys आर टॉप टेक कंपनीज, दे आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली. In order to do any top end work when it comes to research, I think a lot of cognizance needs to be taken in terms of creating that ecosystem. जहाँ पे investors safe feel करें, जो entrepreneurs है, they want to create, they understand कि अच्छा चलो यार we can go and take risks. इस तरीके की arbitrary ruling ना हो, और हो भी तो it should be communicated well. That is the entire point I'm trying to outline. सिर्फ बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, right? So that's next point. Now comes the next point, which is point number 5. A lot of subsidy or a lot of focus has been done on rooftop solar वगैरह पे बहुत फोकस करा गया है. एंड दिस कम्स अंडर नेट जीरो बाय 2070 विजन. अभी 2070 का इंडिया ने विजन निर्धारित किया है दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट टू जीरो. सो दिस इज व्हाट पीएम मोदी हैज सेड. सी व्हाट इज, वी आर इन 2024, राइट. 2070 बहुत लंबा टाइम है, बहुत अच्छी बात है, राइट. दिस शोज विजन दैट इंडिया इज ट्राइंग टू have a vision, communicate it, but I don't think this has any impact on you or me on immediate basis. On immediate basis, we are much more worried about inflation. We are much more worried about accessing low cost energy, accessing regular energy, कि हमारे घर पे बिजली पानी आता रहे regular, that is more important for us. कम cost पे आता रहे, that is more important. अभी मैं अगर आपको कुछ facts बताऊं, so there are 2-3 critical facts that needs to be understood. So number one thing is that almost 50% of India's energy requirements in electricity generation is met by coal. Okay, only 25% is met through non-fossil based energy fuels. So we are very very far off from that perspective. It's not as if कि आप अभी सोलर कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे वगैरह तो आपके बहुत तेजी से पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. प्लीज रिमेंबर दैट. Having said this, the counter argument is that the cost of solar energy production is coming down quite aggressively. For example, in 2015, the price of solar electricity was roughly 12 rupees per kilowatt, right? And now it is 1.99 per kilowatt. So काफी कम कर दी गई है, आगे चल के भी कम होगी. So it will become more competitive. Issue क्या है in solar और wind? इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसको EPC बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. वेरी सिमिलर टू EVs कि यार आपको EV के कितने चार्जिंग स्टेशन दिखते हैं, बहुत कम, राइट. सो अनलेस दिस एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड, दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज विल नॉट गेट पिक्ड अप. दैट्स अ प्रॉब्लम. पीपल इन इंडिया डू नॉट हैव मच डिस्क्रिशनरी इनकम. उनसे बोलो कि यार सोलर पैनल लगा लो, आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा, भाई से प्रॉब्लम है वो, राइट. द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रियली पुअर. लोगों को पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में सोलर पैनल लगना है. उल्टे डायरेक्शन में लगा के बैठ जाएंगे तो उससे आएगी नहीं बिजली. सो ऑल दोज माइनर प्रॉब्लम्स आर देयर. So anyways, just to complete this point in context of the budget, Bhupendra Yadav has tweeted that 1 crore households will be unable to obtain up to 300 units of free electricity every month. Not sure, right? इसमें infrastructure कौन provide करेगा? It's not very clear yet. So let's see how this plans out, but again, that's good news. Now let's speak about some bad points about the budget. Number one is that it did not address anything about unemployment situation in India. Situation right now regarding unemployment rate in India is really bleak. We are sitting on one of our highest unemployment rates post-COVID as of now. Situation does not look good. Even people from IIMs, IITs, placements have been weak. In fact, IIM Lucknow का एक अभी I think किसी student ने वो tweet करा था या व्हाट्सएप से निकला था वो, मैंने उसमें रफली 72 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIM लखनऊ, विच इज वन ऑफ द टॉप IIMs इन इंडिया. 72 बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं. दे वर रीचिंग आउट टू देयर अलम्स कि किसी तरह से नौकरी वोकरी मिल जाए एंड ऑल दैट स्टफ. नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन. अगर आपके IITs, IIMs भी मे भी, और वो भी प्रोमिनेंट IITs, IIMs में प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, तो बैड सिचुएशन है, नो डाउट अबाउट दैट. इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था कि हाउ विल दी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, और कुछ उसमें होना चाहिए था. आई थिंक youth not getting employment is a really weak sign. ऐसी सिचुएशन अभी US में नहीं है, despite US having so many problems. Unemployment rate वहाँ पे high है. 2020 was a bad year. I really hope that कुछ solution इसके around निकाला जाए. This is a major problem. Next related point is related to PSUs. That in the last 10 years, 0 PSUs have been created in India.
ग्रुप ए सर्विस जॉब्स हैव बीन कमिंग डाउन क्वाइट ड्रामेटिकली, जैसे आपने खुद देखा होगा IAS IPS वगैरह की वैकेंसीज काफ़ी कम कर दी हैं. एंड व्हाई इज दिस बीइंग डन? वेल, इट्स डाइवेस्टमेंट. जैसे एक एस्पेक्ट पे तो बोला जा सकता है दैट द गवर्नमेंट हैज नो business of being in business, right? So from that perspective they are reducing their stake. जितनी भी PSUs हैं उसमें अपनी वो भागीदारी घटाते जा रहे हैं, right? They are just bringing it down over and over again, letting private players take over, right? Now, is this a good thing, bad thing? I don't know, but I hope that this does not lead to a situation जहाँ पे competition ही ना बचे, right? It should not happen that there is hardly any competition left. There are just 2-3 oligarchies happening. वो बहुत खराब situation होगी, because at the end of the day you as a normal customer will pay the highest price if an oligarchy is built. So government cutting its holding, bringing private players in is a good sign as long as competition spirit is there. If competition is just killed entirely, this will lead to really bad stuff, right? So no mention has been there of this. टैक्स रिलीफ के बारे में कुछ नहीं बात करी गई. इनफैक्ट लास्ट बजट में अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स वर विदड्रॉन. फॉर एग्जांपल, डेट म्यूचुअल फंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स वर डन अवे विथ. कैपिटल गेन्स ऑफसेटिंग होती थी व्हेन पीपल यूज्ड टू सेल देयर कंपनीज एंड दे कुड ऑफसेट इट बाय बाइंग एक्सपेंसिव रियल एस्टेट. वो सब भी हटा दिया गया था. सो नथिंग बिग हैज हैपेंड फ्रॉम दैट perspective, right? That big ticket offsetting wali cheez. No tax relief has been given. So this is what my understanding is, that this was something that could have been considered given very high tax rates in India. But then again, opposition would have said, yaar, aap populist measures kar rahe ho just before election. So not sure what the thing is. Then comes the final point, which is regarding stock market impact. अभी आपका मन कर रहा होगा कि यार मैं infrastructure stock खरीद लेता हूँ, ये वो. I don't know if you should do that or not. Unless the fundamentals of the company is good, please do not do that. Look at स्पेशली बजट के अराउंड, या फिर जब नई सरकार आने वाली होती है, हर कोई सोच सकता है, राइट? आई मीन कि यार सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो आई विल गो एंड बाय लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. इफ यू आर बाइंग इट एट रियली क्रेजी एक्सपेंसिव प्राइसेस, देयर कैन बी अ वेरी लॉन्ग करेक्शन. इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू. सो प्लीज डू नॉट एक्ट दैट वे. Buy good stuff. For example, according to me, banks are at a good valuation. I'll make a video soon around the same. On top of that, there might be a handful of good infrastructure companies that might be good. So you have to study all those things. I will release a list. I will speak more about it on my member community also. In case you guys are interested, you can join it. I give very fundamental commentary regarding the same. I hope that you enjoyed this brief discussion on budget. मैंने आपको सब कुछ रिलेट करके बता दिया. Hopefully अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी to watch any other video. If you did, do press the like button and I'll see you soon.